सर बैंक्स अभी, आप क्योंकि बैंकर भी हैं, बैंक्स डिपॉजिट को लेकर के जूझ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब लोग जो है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है देश का। जनधन से वो बात शुरू हुई और अब हम जन निवेश पर पहुंच गए हैं। आप और ऑप्शन दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। पहले समझाना मुश्किल होता था कि सिप क्या, अब लोग जानते हैं ये सिप एक बला है जो मेरे लिए अच्छी है, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो आप इससे इकोनॉमी के लिए क्या साइंस देख रहे हैं? डिपॉजिट कम होना, फाइनेंशियलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, एसबीआई की एक रिपोर्ट में भी कहा गया ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हमारे देश का जो है वो नजर आ रहा है। सो म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं और इक्विटी में भी जा रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, उधार लेके लोग मार्केट में एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं। और सेबी बता रहा है कि भाई 90% लोग एफएनओ में, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैसा लॉस कर रहे हैं। आप इसको इकोनॉमी के लिए क्या देखते हैं? इकोनॉमी के लिए ये गुड साइन है, बैड साइन है, या हमें एक मिडिल पार्ट ढूंढना जरूरी है? देखिए, इसको ना 2-3 अलग तरीके से देखना पड़ेगा। पहली बात तो सबसे पहले जो आपने एफ&ओ वाला बोला, दैट इज़ नॉट अवर टारगेट ऑडियंस। दैट इज़ द कैटेगरी विच कम्स विद ग्रीड विद दिस थिंग एंड दे आर हैविंग मनी टू स्प्लर्ज। उनको स्प्लर्ज करने का ऐसे मज़ा आता है, किसी को किसी तरह से मज़ा आता है, किसी को किसी तरह। तो एक बहुत बड़ा एक ऑडियंस है जिनको इन्वेस्ट करके पैसा लूज़ करके भी उनको लगता है कि यार हमने कुछ किया। ये एक नशा है। ओके, तो नशे का कोई उसमें रिटर्न का कोई वो नहीं होता, उसमें पता है सबको नुकसान होने वाला है, फिर भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है वो करते, तो उसमें क्या किया जाए। ये तो आप सिर्फ एफ&ओ की बात कर रहे हैं, आप ड्रीम 11 देख लीजिए, आप ऐसे कितने वो चीज़ें आती हैं। सम पीपल, वेरी फ्यू पीपल मेक मनी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी, बट स्टिल देयर इज अ बिग ऑडियंस which is doing it. This is much bigger than the demat accounts. There are almost 160 million people who are on the online gaming. So that's but that's okay, but this is giving them satisfaction, they are doing it, so nothing right or wrong. When somebody is finding satisfaction somewhere, so it's okay. परंतु ये जो अभी और व्यक्तियों को लेके आने वाली बात है, और बड़ा इकोनॉमी की तरफ की बात है, तो इकोनॉमी का मुश्किल सिर्फ एक तरफ है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ कंपनीज इज लेस. that is some structural issue, and we are not able to, because of the some bars by the regulators, we are not able to diversify internationally. हमारे पास जितना भी पैसा आता है हमें हिंदुस्तान की कंपनीज में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि there is a limit of some $8 billion which is there by the regulator, which was put in few years ago. We are working with the regulator, with the RBI, with the government officials to increase this limit. That will ease out a bit, because we will be able to diversify in the markets which are more attractive than our own markets, which are little valuable. But getting the money in the financialization is always good for the economy, because people are coming with the risk appetite. State Bank is our parent. तो बैंकिंग इंडस्ट्री का तो हमें ये जो है कि लोगों का एक रुझान जो है वो सेविंग से थोड़ा कम होके इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है, एंड दिस इज aligning with the international practices. Okay, if you look globally, so you think this is a good trend? This is a trend which is inevitable. Good or bad, for somebody it's good, somebody it's bad, but this is inevitable. This is the trend, we have to live with it. Mutual funds and equity markets have to live with it, banks have to live with it, because if you look at it, say 7 साल पहले म्यूचुअल फंड का पूरा AUM पूरे बैंक डिपॉजिट का 10% था, आज की डेट में वो 32% हो गया है. 1/3 ऑफ द टोटल सेविंग्स ऑफ द सरप्लस इज मूव फ्रॉम सेविंग्स टू दिस थिंग. दिस इज एट द कंट्री लेवल. तो नेचुरली इस ऐसे माहौल में तो बैंक डिपॉजिट पे प्रेशर आएगा, परंतु बॉटम ऑफ द पिरामिड इनकम्स आर ग्रोइंग. एवरीबॉडी स्टार्ट्स इज जर्नी विद द पुटिंग मनी इन बैंक डिपॉजिट्स. There is a huge flow that will come from there. अगर आप जनधन की बात करें, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले थे आज की डेट में, there is a huge money sitting in those accounts as deposits. That is also plus. But जैसे जैसे वो prosperity बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊपर बढ़ती है, तो आपको एक रिस्क लेने का होता है. There are people who are coming from very poor to middle class to upper middle class. So while the top of the pyramid will always be over financialization will be there, because if you look at a corporate or look at the person, will he or she be keeping money in bank deposit? The answer is maybe 5%, which is the transactional money. 95% will be investment, and investment could be anywhere. It could be in
financial assets, it could be in real estate, it could be in some other market, it could be globally in some other thing. But the moment you keep going down the pyramid, so the percentage of deposits will keep on increasing and investment will keep on coming down. So that pyramid is just nothing to worry for anybody. Good times for banks, good times for investment companies, and good time for the individuals in the country. और इसे रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल इसको कुछ नहीं कर सकता. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया नाम आ रहा है, जियो प्लस ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड. इसको आप, इसकी एंट्री क्या देख रहे हैं? क्योंकि जियो हमेशा एक वो डिस्काउंट देकर उन्होंने अपना बेस बढ़ाया टेलीकॉम में, और आप शुरुआत में कहते रीच, वो बार बार कह रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो है उसमें जियो की जब पावर मिलेगी तो उनकी रीच बहुत बड़ी होगी. आप उनकी एंट्री को कैसे देख रहे हैं? क्या एक कॉस्ट वॉर शुरू हो सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? I don't think so, because we are highly regulated, and the costs of the mutual fund industry are rock bottom. You can't get into negative. Okay, nobody can go to negative. And BlackRock is an international firm. They have been doing business at a particular level. They will not like to kill their international business by discounting in one territory. That is one. And two, they are very respectable player. Jio may be having reach. See, while putting money in financial, I'm not undermining them. They are very good. BlackRock is a very, very reputed, and I have all the respect for them. But reach and trust takes a lot of time. They are entering into the financial markets in India for the first time. It takes years and years to create trust. So SBI or mutual fund, the big names in the industry, they have created their brand over the period of time. They will also take some time, and there's a good business for everybody. And with more players coming into the market, size of the pies goes up, and you will get your share, they will get their share. And beyond a point, when hundreds of people come, then what happens? Then you talk about the absolute growth and absolute numbers, not the market share. Because market grows, number of players grows, so naturally market share will take a hit. But if I want to grow by 25% year on year, am I capable of doing it in spite of the competition? The answer is yes. If two more players like that come, the industry will grow much faster, and will still grow at that pace. So we always welcome competition. They are welcome, and they will definitely create some more sensation, and more number of people will come. As you said, it should not be 5 crores, it's 20 crores. So even if they take 2 crores out of that, and remaining 18 crores, we also take 2 crores, we are happy, they are happy, everybody is growing.